Assalamu alaikum, dear students. وعلیکم السلام. Today we will start Unit 2, Patriotism, जिसका मतलब है हुब्बुल वतनी या जज्बा हुब्बुल वतनी. I'm sure you can see the screen and the lesson is quite visible. Is it so? Can you read my screen? Yes, sir. Okay, that's good. Gentlemen, last week I uploaded a quiz based on chapter 1. Some of the boys they have done it, but some of the boys they couldn't do it. Please make sure that whenever such tests are uploaded, you do them. And never ever skip them, but because we are keeping the data of these tests, which will be updated very soon. And you should not get a 0 just for the simple reason that you were absent from the test. Next week you will have your quiz too, and it will be based on patriotism, unit 2, its exercise, and the grammar part which we will cover. Let's begin with the lesson now. Patriotism Jazba-e-Hubbul Watni. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Jazba-e-Hubbul Watni का मतलब है love for the motherland, मादरे वतनी से या अपने मुल्क से, अपनी सरजमीन से प्यार, or to devotion to one's country, या अपने मुल्क के लिए जानिसारी के जज्बात का होना. जब जज्बा हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से प्यार या उसके लिए जानिसारी के जज्बात का रखना है. A patriot loves his country. A patriot loves his country. एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से प्यार करता है and is willing to sacrifice और कुर्बानी देने के लिए चाहत रखता है when the need arises, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और इसके लिए कुर्बानी देने की ख्वाहिश रखता है जब कभी भी ऐसा वक्त आन पड़े या इसकी ज़रूरत हो. The word patriot comes from the Latin word patriota. मुहिब्बे वतन का लफ्ज़ जो है या पैट्रियट का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान, लैटिन लातीनी वर्ड लफ्ज़ पैट्रियोता से लिया गया है, which means countryman, जिसका मतलब है अवाम लोग. It is considered a commendable quality. Commendable काबिले तहसीन, ये एक काबिले तहसीन क्वालिटी खसूसियत कंसिडर्ड समझी जाती है. और उसके साथ एक सवाल भी है. द क्वेश्चन इज हु ऑफर्स sacrifice for the country, and the answer is Patriot. yes, patriot. The answer is a patriot offers
sacrifice for the country. Now, paragraph number 2. But before that, if you have any question related to paragraph number 1, please go ahead and ask. Okay, then let's continue with the second paragraph. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. Patriotism, जज्बा हुब्बुल वतनी, gives people, लोगों को देता है, the strength, कुव्वत, and courage और हिम्मत, to safeguard, हिफाजत करने की, the interest of the country and the nation. Interest, उसकी, the interest of the country, interest कहेंगे आप मुफाद को या मफादात को. The interest of the country, मुल्क के and nation और कौम के मफाद की हिफाजत करने की हिम्मत और ताकत बख्शता है. जज्बा हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क के मफादात, अपने मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करना, सेफगार्ड, हिफाजत करने की हिम्मत और ताकत देता है या बख्शता है. For a patriot, please try to differentiate between the pronunciation of patriotism and patriot. When it is patriotism, it's patriotism. And when the word is patriot, it's patriot. Please differentiate it. For a patriot, मुहिब्बे वतन के लिए, the sovereignty, खुद मुख्तारी, integrity, सालमियत, सालमियत बाकी रहना, पूरा रहना, and honor और इज्जत of the country, मुल्क की, are of supreme values, आला तरीन कदरों की जमा है, कदर की जमा है अकदार, अलिफ काफ के साथ, नुक्तों वाला काफ. are of supreme values, आला अकदार हैं, on which no compromise can be made, जिन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता. एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत और उसकी इज्जत, यानी मुल्क की इज्जत, आला तरीन अकदार होती हैं, जिन पर किसी किस्म का कोई भी समझौता, कंप्रोमाइज, समझौता नहीं किया जा सकता. Patriots render, मुहिब्बे वतन render, देना, give, देते हैं. Sacrifice, कुर्बानी. For the preservation, बका, and protection और हिफाजत of these values. Patriots, मुहिब्बे वतन, render sacrifice, कुर्बानी देते हैं, for the preservation, हिफाजत के लिए, and protection और महफूज रखने के लिए, of these values, इन अकदार को की हिफाजत और उन्हें महफूज रखने के लिए कुर्बानी देते हैं.
paragraph number 3. But before that, if you have any problem in paragraph number 2, please raise questions. Any problem? No, sir. No, sir. Okay, fine. No, sir. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation قوم builder, معمار قوم تھے, قوم کو بنانے والے تھے. معمار لکھنا آتا ہے سب کو؟ Yes, sir. Yes, sir. کوئی Yes, word sir. ایسا ہو اچھا کوئی ایسا کہ جو لکھنا ہی نہ آتا ہو تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. پینٹ میں کوئی بہت اچھا کام تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ کوئی ٹوٹا پھوٹا سا جیسا لکھا گیا میں لکھ کے آپ کو دکھا ضرور دوں گا. ٹھیک ہے. قائد-اعظم محمد علی جناح قائد-اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر. معمار قوم تھے, قوم کو بنانے والے تھے. اینڈ اے گریٹ پیٹریٹ, اور بڑے محب وطن تھے, اپنے وطن سے پیار کرنے والے تھے. He wanted to protect the values. آپ اقدار کی پروٹیکٹ کرنا, حفاظت کرنا, وانٹڈ چاہتے تھے. آپ اقدار کی حفاظت کرنا چاہتے تھے, کلچر, تمدن کی, اینڈ ٹریڈیشنز, اور روایات کی, آف دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. کن کی روایات؟ مسلمس, مسلمانوں کی, آف دا سب کانٹیننٹ, بر صغیر, پاک و ہند. وہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اقدار, تہذیب و تمدن اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity. He gave the Muslims, آپ نے مسلمانوں کو دی, a sense of identity, sense سمجھ, سوجھ بوجھ, of identity, اپنی شناخت کی. آپ نے مسلمانوں کو ان کی اپنی شناخت کی سمجھ بوجھ دی. by securing a separate homeland for them, by securing, حاصل کر کے, a separate, ایک الگ, homeland, زمین, وطن, for them, ان کے لیے. آپ نے ان کے لیے ایک الگ زمین کا ٹکڑا حاصل کر کے انہیں کیا دیا؟ a sense of identity, اپنی شناخت دے دی. ایک منٹ کا اس میں پاس لیں گے. میں ابھی, آپ آن لائن ہی رہیں سب کے ساتھ, ٹھیک ہے. عرفان عرفان کیا حال ہے؟ عرفان کیا حال ہے؟